Right, we have got one question from the audience. What memes you like? Dank memes, man. Like, dank meme. My humor is getting so dark with time. I'm so scared. Someone sees my humor. Fan of shock. Yeah, fun. Okay. Shock. Fan of shock. Well, there should be a huge shock element and there should be reality in that shock. Again, Is that why you are running a startup? Just kidding, man. Just kidding. So, Okay, let's actually first start with what are you doing right now? Because we are not introducing you. So, Ayush, do you want to introduce yourself to the audience on what exactly are you doing right now at Level Supermind? And yeah, after that, we can take it from there. yeah, let's keep it simple. So, Yeah. right now, I'm one of the co-founders of Level Supermind, and I'm handling operations, everything basically there. We are a team of 20 people, 20 plus people, and the problem we are trying to solve is we want to supercharge the minds of the user through meditation, sleep stories, mind muscle workout. Apna TG is young people. Specifically, we are targeting competitive exam के students, one, and young driven adults. ठीक है, वहाँ पे gap है, market gap, जहाँ पे हमें we can fit this product in. And what I am exactly doing, मतलब day to day operations देखा जाए तो I'm trying hard to be near consumers. ठीक है, it's very hard. It's very hard to be near consumers, given all the logistical या जो भी legal या जो भी human related operational part होता है. तो I'm trying, every step I'm doing is to ensure कि मेरे और consumer के बीच में distance कम हो और बढ़े नहीं. ठीक है, इसलिए मैंने अपना लिंक्डइन में भी टाइटल लिखा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव. अच्छा, तो I didn't see that. I thought co-founder लिखा हाँ, था. तो Okay. so I had, like, when you have, मतलब startup पे you can put any tags and titles. So I hope like startups it's a में technological company, right? So in a it's a technological company, right? So in a tech company वो gap कैसे create होता है customer और एक company के बीच में? I Like it's mean, not what a consumer product, right? You need to deliver anything. That is like you need to basically ship anything to their houses or anything, right? So where exactly you feel the disconnect is happening in the tech world, basically in the tech startup? यार, अग्रवाल जी क्वेश्चन नहीं समझा मैं. Can you make it simple for me? सही है. So तो you're बेसिकली asking, जैसे कि हाँ, सीईओ का तुमने कहा कि एक दो लोगों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है जो कि बेसिकली तुम्हारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर और कंपनी के बीच में एक डिस्कनेक्ट ना फील हो है, उसको तुम कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते हो एंड यू विल बेसिकली इम्प्रूव इट, राइट? तो उसको किस तरीके से करोगे, राइट, टेक में, see, first, एक टेक स्टार्टअप में? टेक स्टार्टअप कुछ भी स्टार्टअप हो, टेक सर्विस कुछ भी, वी आर सर्विंग कस्टमर, राइट? राइट. And when 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 you burn your hands enough, you realize ki the best way to survive is to be product driven. And when you are product driven, you need to hear your users very very efficiently. Let's put this word. Okay. When you and when you build a company or when there's operations, so let's say there is, you have fixed hours where you are efficient, right? You have, let's say, 10 hours of efficiency. At least मेरा तो 8 ही है, उससे ज़्यादा नहीं, 8 से 10. तो उसमें I have to think about product operation. I had to think about vision of the company. I had to think about the finance part of it. Okay, there are a lot of things that's happening for the survival of the company. Okay, there are legal parts, lot of things. मतलब, there are like BMC वाले आ गए office में, for fuck's sake. मतलब, why, I don't know why they are there. Okay, so all these distractions, which is very important for the survival of the company, distracts you from being near consumer. Okay, what I mean by being near मेक consumer सेंस. is, uh, उनको, आई मीन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी अच्छे से कि अगर 100 यूजर्स है, ठीक है, 98% ऑफ द यूजर कुछ बोलेंगे ही, दे आर साइलेंट वॉचेस. ठीक है, 1% ऑफ द स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स हियर, दे आर लाइक, दे विल ज्यादा ही बोलेंगे. ठीक है, हर चीज में आवाज करने लगेंगे. 1% जो प्रीमियम यूजर है,
वो भी बोलेंगे, बट वो पे कर रहे इसलिए बोलेंगे, बट 98% बोलेंगे. तो सिंस 2% ऑफ द टोटल यूजर्स बोलते हैं, तो यू नीड टू hyper prioritize in listening what they're saying. Okay, and when you go into the ops of it, I've seen many companies, cliche mistake, they lose sight ki what is the real problem, what is user feeling, what really they want to solve. ठीक है, आजकल बहुत होता है कि मुझे ये बनाना है, भले यूजर को चाहिए कि नहीं. ठीक है, I'll make this क्योंकि it sounds मस्त. ठीक है, तो मे भी मतलब successful हो जाते हैं, but if you want to build a sustainable business, depends upon goal also. But if you are very near to the user and if you are hearing them very carefully, you can build a product that is evolving with your users. Okay, so your company becomes product driven. So there is this beautiful book called, I mean, everyone should read a lot of books, but start with this book called Build Trap. You know, so it has this concept that there are 5 types of company. One is sales driven company, जहाँ पे sales team decide करते हैं कि ये बेचेंगे इसलिए ये बनाना है. Another is visionary Elon Musk type company, जहाँ पे चल एक vision बना लिया, अब छोड़ते हैं इसको कैसे भी, भले यूजर को चाहिए कि नहीं. Third is tech driven company, कि ये innovative tech है, Web3 या कुछ भी, अब इसके अराउंड प्रोडक्ट बनाते हैं, भले यूजर को चाहिए कि नहीं. What I mean by यूजर को चाहिए कि नहीं is real problem of user is being solved through that product. So that is tech driven. And the one which I think it's my DNA resonates with, and I think it's a, in my world, it's a smarter way to build. It's product driven, where you build products, yeah, you build solution for user problem, and you're constantly in touch with it. So I don't know if I answered your question, but बहुत No, distraction makes हो जाता sense. है No. ops में. ठीक है, Hmm. and even though टेक कंपनी है, कुछ भी है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस Hmm. बहुत होते हैं. ठीक है, Hmm. अभी यू विल रियलाइज, मतलब इवन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो यू नीड टू हाइपर फोकस. मैंने अपने कंपनी में क्या किया है, जो भी मेरा कस्टमर सपोर्ट ईमेल है, जो भी मेरा, आई हैव ऑटो फॉरवर्डेड दैट ईमेल टू मी. ठीक है ना, तो Hmm. आई डेली हैव 300 ईमेल फॉर नो रीजन. तो Hmm. तो आई एम रीडिंग इट थ्रू अच्छे से, आई एम डॉक्यूमेंटिंग क्या आ रहा है, एंड trying to prioritize, given since the bootstrap company, trying to prioritize which problem to solve first, given the quantum of requests and the vision of the company. So दोनों साथ में play होता है. I think follow-up question to what you mentioned. Now you're a bootstrap company, so तू कर पा रहा है ये सब, product पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है. So, and if and हाँ, when you raise capital in the future, the decisions of going only with the needs of the customers won't or might not be a priority, right? So how would you want to sustain this model even in the future? देख भाई, there's a reason कि हम bootstrap है. We understand. So I've sat with lot of investors for learning sake. ठीक है ना, मतलब light speed से लेके तुम अनुपम मित्तल भी डालो, I've sat with them and understood how they think. ठीक है, तो one, have the balls you to say no to what investor wants. मतलब please understand, investor का job है वहाँ पे to double his money. Let's say he's putting X rupees, he is optimizing for 4X out of it. That's what the investor is optimizing. You are optimizing sustainability 20 years, 30 years. ठीक है, Yeah. and ये दो mindset को आपको marry करना होता है, keeping in mind कि यूजर को क्या चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूजर को जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग अवे फ्रॉम X to 4X माइंडसेट. ठीक है, हाउ वी विल डू इज, एंड दैट्स द रीजन वी बूटस्ट्रैप. हम लोग अभी ऑपरेशनली ब्रेक इवन में. ठीक है, वी विल नेवर रेज मनी फॉर सर्वाइवल. ठीक है, टुक अस टाइम, वेरी स्लोली वी डिड दैट. तो अपना सैलरी कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट निकल रहा है. ठीक है, Hmm. अब चालू हो गया. तो अभी इफ So आई एम how big रेजिंग is मनी, the, just सॉरी, to cut right, just to understand a little bit here, right? How big is the company? How many employees do you 20 have? people are there. There are support staff. Okay. ठीक है, I have a Mm-hmm. responsibility of dreams of 20 people right now. So Mm-hmm. focusing with them will scale धीरे से, but So आराम all से. of those ठीक है, 20, you guys are paying them, right? And that everyone too is with like, the, yeah, yeah.
everyone is nice. being paid nicely, and मेरा aim भी यही है long run में कि I want to pay the talent top 1% of the market. मतलब Right. pay heavily, simple, pay them Right. well so that they forget and they create impact. So So Yeah. you also uh, have put your money there, like when you they bootstrapped this, get or only the founder? they see how the cash flow of this company works is Mm. first I forgot to introduce my co-founder. One is Ranveer Yeah. Allahbadia. ठीक है, he is India's one of the biggest infotainment influencer. ठीक है, another is Harshil Karia. ठीक है, दोनों का वैल्यूएशन टर्म में देखें 200-300 करोड़ वैल्यूएशन, तो कैश है उनके पास. ठीक है, तो वहां से मनी फनल हो जाता है. ठीक है, Right. वो मनी फनल जो होता है उससे सब अपना अभी वो निकाल रहे हैं, मतलब फ्रॉम देयर कैश फ्लो दे आर लोनिंग लेवल सुपरमाइंड Mm. ऑन बुक्स. ठीक है, तो वी हैव स्ट्रक्चर्ड इट दैट वे कि इट्स अ लोन. ठीक है, तो वहां से पैसे आ रहे थे, अभी ब्रेक इवन हो गया, तो धीरे धीरे विल पे द लोन बैक. रिगार्डिंग द इनिशियल क्वेश्चन कि इन्वेस्टर ये बोलेगा आप ये बोलोगे, इट ऑल Mm. डिपेंड्स ऑन योर, इट्स its founders has that aura energy to founder knows the business more. Let's understand that. Okay, so it all boils down to how you do stakeholder management. Okay, and I mean first तो having the assumption कि investor हमेशा consumer के against बोलेगा may not be true in some cases. That's why you bring right investors on the table. Okay. You मतलब अभी भी जब मैं लीगल देख रहा हूँ तो देर आर क्लॉजेस व्हिच मेक देम इफेक्टिवली you can't do anything, you just give money. So there are ways to do that. ठीक है, just give us money and it's my responsibility to multiply. There are various Yeah. infrastructure. It all depends on how you manage the stakeholders. ठीक है, but level supermind and at least जो मेरा DNA है वो will always be near consumer. If they want to join me, I would love to take their help. ठीक है, but कंज्यूमर से दूर नहीं जा सकते क्योंकि हिस्ट्री हैज प्रूवन दैट कि product driven brands have more probability of survival in long run, and I've seen that now. ठीक है, तो my reality is that. तो I yeah, think it makes तो sense. हो जाता है, मैनेज हो जाता है. हाँ, and so product driven. So you're just targeting consumers as of now and not planning to target businesses. Is that the way forward? And if not, then how would you cater to say the B2B business that if you want to get into that at any given point in time? Okay, I hear you. You're asking कि way forward क्या है? Is it just B2C? Is it B2B? Is it B2B2C? तो like down the line it's all about distribution. ठीक है ना, the complex word boils down to distribution. तो Yeah. B2C, what we figured out, ठीक है, to have a cloud, to have some, this industry works on reputation. One, ठीक है ना, तो to enable B2B, I need to have a good B2C relationships. I need to have good rating. Right now we have 3,000 reviews Play Store, App Store मिला के, उससे भी ज़्यादा होंगे. ठीक है, and we are averaging about 4.7, 4.6 के around, वो हिलता रहता है, 4.8 भी चला जाता है. ठीक है, तो we are focusing right now because limited resource, limited team on making a solid B2C product. ठीक है, एक बार रेपो बिल्ट हो जाएगा तो वी कैन गो टू B2B. अभी B2B को मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ. अभी जो हम लोग सोच रहे हैं, B2B हो गया कॉर्पोरेट्स एंड सेकंड हो गया स्कूल्स या कोचिंग सेंटर्स. ठीक है, एक बार यहाँ पे रेपो है, यहाँ पे एंगेजमेंट है, तो यहाँ से बहुत सारे लर्निंग है, तो मैं इनको B2B में शिफ्ट कर सकता हूँ. इट हेल्प्स मी इन सेलिंग इजीली. जब यहाँ पे मेरे पास इतना डेटा है कि अरे देखो इतना रिटेंशन है, इतना रिपीट रेट है. ठीक है, आई कैन सेल देम एफिशिएंटली. तो वी विल एक्सपैंड. एक दूसरा होता है B2B2C कि मैं जाऊंगा स्कूल के पास में, बोलूंगा देखो आप कुछ मत करो, डोंट बाय फॉर इट एंटायर स्कूल, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट, हैव अ कमीशन. दैट इज B2B2C. मतलब मैं स्कूल को जाऊंगा, स्कूल डिस्ट्रीब्यूट इट एंड जितना कन्वर्ट होगा उनको कमीशन मिल जाएगा. व्हाटएवर, वी कैन डिस्कस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बहुत सारे वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, राइट नाउ वी आर थिंकिंग दैट, बट मेजॉरिटी फोकस B2C है क्योंकि यहाँ नील करेंगे, बहुत सारे लर्निंग है, फिर वो ऑटोमेटिकली B2B में हो जाएगा जो पैरेलली चल रहा है. जैसे अभी 2 days बैक मतलब जस्ट फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक कि Yeah. इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिटेशन को कंपलसरी बनाने का न्यूज़लेटर निकाला. द टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट हैज बिकम नाइस नाउ. Yeah, it's ठीक pretty है, good. तो आई मेट एनसीईआरटी की बंदी को, तो अभी कुछ तो रीइमेजिनिंग एजुकेशन करके सेरेमनी था, मैंने अपने स्टोरी में भी डाला था, आई थिंक यू. Yeah, I saw. तो
वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर अपेरेंटली आने वाले थे, नहीं आए क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड। तो Okay. we went there with the name की, but somehow we got in touch with the NCRT की वो lady. So she was saying कि the timing has been is right. The product is nice. We can मतलब government also wants to expand. देखते हैं अभी कैसे pan out होगा. There are various ways to distribute it. ठीक है ना. अभी B2C है. Ranveer performance ads. There are 19 traction channels जो आप है to sell it. ठीक है. There are various traction channels like beautiful world there. Then B2B has a different game. B2B में मेरा learning ये. Please stop me and ask me more if I'm in a zone of speaking. तो stop No, me no, if please go I'm ahead. Please go not ahead. making. Yeah. ठीक है. B2B का मेरा learning ये है कि if you approach, if you do a push game, Hmm. ठीक है ना, if you do outbound, हाँ. conversion ratios कम होता है, effort waste होता है. तो मेरे टीम में इतना अभी मेरे को ऐसे टोन की तरह फैलाना नहीं है टीम को. ठीक है. I want to play inbound game. कि they approach us somehow Yeah. Okay. Okay. and we convert them. If Will they you put reach out to us, a we reputation in हाँ. such a way that brands come to or companies come to you to collaborate instead of you really going out in that Yeah, direction? it's more efficient. It's more efficient. ठीक है ना. तो उसके वो अगर enable करना है तो repo build करना होगा, B2C में बड़ा होना होगा. So that's how it should be. ठीक है ना. And this learning comes from Shebang. हर्षिल ने ये लाया था and it makes sense क्योंकि हर्षिल का जो Shebang है which is 1200 company, 1200 people company, they're handling H&M, Zara. If this is a pattern they observed there, and I think it's a very smart pattern. I was reading this book called An Academy. Even they believe this philosophy of मतलब inbound sales instead of outbound sales. ठीक Hmm. है. Byju's have an outbound sale, so there's a repercussion of that. And might be ठीक है ना, क्योंकि भले ही intention of founder and the management team is very clean, very pure. ठीक है. But on ground execution में there is a information loss per pyramid, मतलब हर एक structure में. Right. How it pans out is very sometimes may not be in a vision or in sync with what the management is thinking. Maybe it's safer to have an inbound where there's already an intent and you convert them nicely, serve them nicely. Matlab, again, delight factor should be there with the consumer, with your partners. So that's how things go. Nice. I hope I answered your So question. Yeah. yeah, definitely. So Ayush, right, I just observed, right, that you are very inclined towards solving customer needs, solving the हाँ problem, solving the gap in between, right? So हाँ after your graduation from IIT, right, how did you हाँ. find your passion towards it, and what you did in IIT, and what took you towards this becoming a co-founder in Level? So if you can help us with this journey, right, maybe it can help a lot of people around there to figure it out and like kind of a thing, right? Yeah, sure. 4-5 क्वेश्चन है उसमें जो मैं आंसर करूंगा वो Yeah. बता Yeah. रियाज. ठीक है. Maybe you can तो take it like a let's journey, start right? with How did college. you Let's start it? start with Yes. college. ठीक है. Yeah. तो I joined IIT Madras. तो maybe मतलब first year में only I realized कि I don't know, something inside me said कि wait and watch, see things, uh, absorb rather than get lost. मतलब क्या होता है कॉलेज से आप जंप करते हो फर्स्ट ईयर में और यहाँ पे एक बंदा है जो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी स्टेट्स का एक बंदा है. तो एवरीवन व्हेन यू आर इन दैट कॉलेज everyone is topper, but topper के साथ भी they have something, ठीक है ना, Yeah. which they are very nice with. तो बहुत एक I think first semester या first 30 days, first 60 days of that first year बहुत सारा sand water जैसा होता है, like too much going on, too much going on. ठीक है. तो I had that start से कि भाई रुको, wait and watch. ठीक है. No hurry. उतनी ज्यादा है राइट एडजस्ट होने में कि यार इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, मेरे को तो पता ही नहीं था. हाँ मैं तो हाँ. कॉलेज से घर आता था, सॉरी स्कूल से घर आता था और दोबारा स्कूल जाता था बस. Yeah. राइट. So वेरी गुड. had this thing पहले से maybe कि wait and watch. I mean, you're going to live for longer years, so why hurry? So I was watching. I realized कि what I want from my college life. I realized कि I wanted exposures जो मुझे कॉलेज के बाद कभी नहीं मिलेंगे लाइफ में. ठीक है. There are certain things which I can do only in IIT Madras. ठीक है. तो I hyper prioritize my energy into shortlisting things जो कॉलेज के बाद मुझे कभी नहीं मिले. ठीक है. जैसे मुझे पता था कि मैं सर नहीं जा सकता हूँ कभी भी कॉलेज के बाद इंटरनली एज अ इंटर्न. ठीक है. क्योंकि आई न्यू कि मुझे अकेडमी में भी उस समय मुझे डाउट था कि मैं जाऊंगा कि नहीं, बट सर घुसना इज वेरी हार्ड. तो आई इंटर्न एट सर. देन आई न्यू कि मुझे एफएमसीजी का वाइब लेना है. आई गॉट
chance to work with ITC, which is phenomenally life-changing experience. I But was why you part of chose the FMCG, right? You did यार your पैसे है, graduations in ठीक है, which field? Sorry. पैसे है. So I graduated from this course called engineering design. It's a 5-year Okay. BTech MTech program. Okay. It if normal भाषा में बोलूँ तो it's mechanical plus electrical का average. IIT Madras में है, Mm-hmm. ठीक है. Mm-hmm. And उसमें सब है, AI है, ML है, ठीक है. Robotics Mm-hmm. भी है specialization. I chose biomedical engineering, keeping in mind future. तो But you kept last year आके yourself open for different fields, right? मतलब not only कि यार मैकेनिकल में ही कुछ करेंगे या इलेक्ट्रिकल में ही कुछ करेंगे, क्योंकि मेरी डिग्री इसमें है. बिकॉज बहुत बहुत बच्चे जो होते हैं ना कॉलेज में, वो सोच लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं कि यार हमारी ये डिग्री है, कुछ यही करेंगे, और फिर बाद में फोर्थ ईयर में सोचते हैं कि यार इसमें तो कुछ अब मन मतलब इतना तो मेरे को आता भी नहीं है और ना ही मेरी प्लेसमेंट हो रही है, तो मैं अब करूँ क्या. वो फोर्थ ईयर के बाद थिंकिंग प्रोसेस चालू होता है. बट आई correct. थिंक कि तुमने शुरू से ही यू केप्ट योरसेल्फ ओपन हाँ व्हाइल ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एज वेल, राइट? हाँ, मैंने अपने लिंक्डइन बायो में भी लिखा नाइस. है, आई फाइंड मीनिंग इन एक्सप्लोरिंग, ठीक है. मतलब मैं आई फाइंड मीनिंग, अब मैं क्या करूँ, दिस इज माय डीएन, ठीक Life है. is तो all आई about एम exploring, right? And that's आई what its true meaning is. Yeah, हाँ, I आई फाइंड completely मीनिंग इन agree. एक्सप्लोरिंग, तो इट कम्स नेचुरल टू मी. मतलब देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर मोर, ठीक है, ऑब्वियस Hmm. रीजन. तो बट मोस्टली आई एम वेरी ओपन इन एक्सप्लोरिंग. I figured out कि I know myself more, and यार इंटरनल डिटेलिंग अच्छा हो जाता है. मतलब when you talk to me और थोड़ा you will figure out there's a lot of layers of thinking that has gone. Yeah. तो कॉलेज में ये था, I was open to exploring, and उसी बहाने में I was also prioritizing कि कॉलेज के बाद मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें किए, पीओआर में पार्ट लिया. आई डोंट नो, मैंने बायो में भी लिखा, मेरे पास जितने भी बकेट लिस्ट थे कॉलेज में पूरे हो गए. मतलब फोर्थ ईयर तक आते आते आई वाज लाइक अब क्या करें, कोविड आ गया, थैंक गॉड, तो अब कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है. तो कोविड जब आया और जब लेवल का डिस्कशन चल रहा था, मैं फाइनल सेमेस्टर में था, ठीक है. फाइनल फाइनल मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था लेवल मतलब कॉलेज से, तो मेरा डीडीपी चल रहा था. एंड आई हैड अ सेंस, इंट्यूटिव सेंस, कि ये कोविड में ना और मेरा एक्सप्लोरेशन कम हो गया है, आई शुड Hmm. ट्राई आउट समथिंग, ठीक है. क्योंकि लॉक्ड इन अ रूम, lot of lot of things happening in life, ठीक है. So, कोविड में Ayush, बहुत before कुछ हो you रहा go to level, right? The one था. thing that you did you focus on your CGPA, or did you think that was not a priority in college? हाँ, देखो, since it's a platform where people will listen, so I will be very mindful of what I'm saying, ठीक है ना. Focus on hard work, Okay. ठीक है. It can be in CGPA. क्या होता है ना, 25 तक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, ठीक है ना. कैरेक्टर बिल्डिंग में स्ट्रगल होना चाहिए, पीरियड. आई हैव वर्कड विद पीपल अभी जिन्होंने अर्ली 25 में स्ट्रगल नहीं किया. I see difference of that grittiness, ठीक है ना. मतलब वो sharkiness missing है. I'm not generalizing. There are few people, ठीक है. There are exceptions जो पहले grit मचाए नहीं और फिर अचानक. But on an average, I've seen कि मेहनत करो, ठीक है. अब मेहनत तुम कहीं भी कर सकते हो, ठीक है. uh, मेहनत तुम कर सकते हो अकेडमी में, क्योंकि वहां पे क्या ना, इट्स बोरिंग, ठीक है. When it's boring, when you are comfortable with being bored, which is a superpower, ठीक है It ना. is. It is. Very important to get bored, ठीक है. Uh, academics gives you that platform, so you can do that. But never ever stop working, stop working hard, okay. And it can be anything, man. You build your body, I don't mind. Build a fucking great body, matlab 12% fat खींच लो, okay, whatever, okay. That's also struggle. Or you I mean, I was a person who was putting effort in exploring, okay ना. मतलब I was the guy, इसलिए मेरा यूजर नेम भी आयुष मिसफिट. आई वाज एक्सप्लोरिंग, मतलब आई वाज लाइक डूइंग रैंडम थिंग्स. मतलब इवन इन द मॉर्निंग आई मेट माय कॉलेज फ्रेंड्स, तो आई वाज डिस्कसिंग क्या था, तो एवरीवन इज सेइंग कि ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स जो नॉर्मल जनता नहीं कर रही है. एंड मे बी मोस्ट ऑफ माय एफर्ट वाज देयर. तो सीजीपीए पे अगर फोकस करना है तो करो, अच्छे से करो. मेक श्योर यू आर इन टॉप 1%, ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि चूज करके 1% में नहीं आ रहे. और अगर नहीं करना है तो do not waste your time. I mean, do not waste your time in not struggling in your initial 25. I would put this perspective in, क्योंकि फिर वो क्या है ना, वो 30s में दिखता है, ठीक है. हाँ. मतलब वो शॉर्टकट दिखता है.
ऑलरेडी मतलब आउटलायर्स हैं, प्लीज, मतलब जनरल स्टेटमेंट नहीं है, बट जो भी मैं बोलूंगा देयर आर आउटलायर्स ऑलवेज. पर एक फेज बट के लाइफ में ग्राइंड करना इज व्हाट इज वेरी नेसेसरी, राइट? इनिशियली आई थिंक करना है, ठीक है. हम्म, इनिशियली कर मतलब लोगे तो बाद में थोड़ा सा आसान हो जाएगा. यू विल फाइंड द राइट कनेक्शन, यू विल फाइंड द राइट नॉट थिंग्स हैपनिंग. मे बी नॉट डीएनए बिल्ड हो आसान. जाता है. हाँ नॉट बट नॉट एवरी आसान नहीं टाइम, होता. बट एटलीस्ट ग्राइंड करना जरूरी है यार, हर स्टेज पर ना. हाँ, मसल मेमोरी, माइंड मेमोरी बन जाता है, वो एक होता है ना एफर्टलेस यार. हम्म. 25 तक तो ब्रेन डेवलप नहीं होता, ठीक है ना. तो इंस्टेड ऑफ 25 तक घिसो भाई, ठीक है, कहीं भी. whatever you love, क्रिकेट पसंद है, घिस के खेलो, बट मेक श्योर यू ग्राइंड टिल 25. उसके बाद भी करना है, बट एक मोमेंटम सेट हो जाता है. आई मीन, आई रियली लव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, जहाँ 25 तक पढ़ने बोलते हैं, फिर मत जो भी, मतलब 25 to 50, सेटल हो whatever you want to do, गए. whatever you want to do, then whatever that thing is, अभी याद नहीं Yeah. आ रहा, but 25 तक I think is very important to build the foundation of life, and struggle is a part of it. Can be different type of struggle for different segments of people, ठीक है. तो ये this is how I see it, ठीक है. Hmm. And yeah, I hope I answered your question कि नहीं नहीं, CGPA that's important clear. क्यों है. I wanted to address it because काफी कॉलेज स्टूडेंट्स बोलेंगे कि तुम एक्सप्लोर करने बोल रहे हो, इसमें हमारा सीजीपीए की वाट लग रही है बिकॉज हम इतने सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है मे बी. बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू वांट टू डू पोस्ट कॉलेज आल्सो, एंड इफ यू थिंक दैट सीजीपीए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल say in getting there, then you should definitely focus on it. It's not Yes, मतलब limiting जो भी factor. करो यार, पूरा करो बेसिकली, राइट? हाँ, एंड be जस्ट ओपन 1%. योरसेल्फ टू Yeah. हाँ, थिंग्स, राइट? मतलब एटलीस्ट डोंट जस्ट स्टक टू वन थिंग कि यार सीजीपीए तो आ नहीं रहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ. अब तो चलो हाँ, जो भी है वेट करते हैं डिग्री खत्म होने का, फिर सोचेंगे. मतलब दैट्स नॉट द थिंग, राइट? जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज, गो एंड एक्सप्लोर द राइट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, फाइंड योर पैशन. correct. कुछ ना कुछ करते रहो, यू विल फाइंड आउट, राइट? Yeah, yeah. सो यार हाउ मतलब डिड एक दिस. और, या. सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, ना बट ना, लेट्स गो. यार पता नहीं, मतलब जितना मैं देख रहा हूँ ना यहाँ से चीजों को, हम्म. एंड फ्रॉम टॉप ऑल्सो, मतलब टॉप एज इन लाइक कैश, मतलब वैल्यू क्रिएशन मोड से देखूँ तो या. आई एम नॉट श्योर कि हार्ड, मतलब 4 year 5 year लॉन्ग डिग्री, how beneficial it is in coming time. I have some doubts, ठीक है. शॉर्ट टर्म कोर्सेज आर बेनिफिशियल क्योंकि वो डायरेक्ट वैल्यू क्रिएशन मदद करते हैं, बट वर्क हार्ड, मतलब गेट अ 9 pointer, 9.5, 10 out of 10 to build your muscles rather than just building that skill, because जब तुम रियल वर्ल्ड में आओगे, आई डोंट वांट यू टू हैव एन इल्यूजन कि वो काम आएगा. चांसेस आर देयर कि वो कभी काम नहीं आएगा, बट द मसल यू हैव बिल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर मान लो तुम्हें तुम्हें शॉर्ट टर्म खेलना, लॉन्ग टर्म भी खेलना, व्हाटएवर गेम यू वांट टू प्ले, I would still say कि educate yourself, do courses which will bring you near to your why of life, ठीक है, your goals of life. Do that courses, read books. मतलब college में तो I didn't read enough. I was more of a physically exploring learner. But now when I'm in Mumbai, when I get to meet a lot of people, get to interact with a lot of people, I realize books are great mentors. मतलब एक टाइम के बाद it's books and people can teach you equally, maybe books can teach you more, ठीक है. तो mentorship, read, read, full stop, at least for my thing, read more. Yeah. About CGPA and importance and how we prioritized in college, right? And from there, I think हाँ, before that, you were talking about how did you get into level, which your journey you were talking about from college to transitioning to level. And last semester okay. is when you, while you were in college, you actually हाँ, in touch with the founders. So I think that would be yeah. interesting for you to know as well. So we can start from there. Okay, okay. So what happened was, December, okay, I went to this 10 days Vipassana course again with an exploratory mindset. And man, I was shocked. I was shocked what this human brain is. Matlab, literally, not for business purposes. I'm saying I was shocked. And then when I went there, uh, a lot of good things started happening. I don't have a logical thing. I use the word providence. Or let's say nature's gift. So I went to Vipassana. I came out. So I went through Mumbai, ठीक है ना. तो मुंबई में आई सॉ पवई लेक के ऊपर मून सन, एकदम एकदम सुंदर सा सन. आई वाज लाइक मेरे को मुंबई आना है,
ठीक है. I went home to Jamnagar, and out of nowhere I started seeing Harshil Karia's podcast with Ranveer. ठीक है. And so I don't know, I have a gut, let's just say gut, okay, which has helped me in my life. So the gut said ki this guy speaks a language which my intuition gets it, okay. And it said ki just reach out to this person, देखते क्या होता है, ठीक है. तो I messaged Harshil ki boss, let's create a dent, ठीक है. I have an intuition ki we should work together. I think you've And I put this just said, message out as well on LinkedIn and yeah, on Instagram. recently I put a post कि how the journey was, बहुत brief में डाला था, because it's my new year goal to keep my thoughts out, because it's important to keep Correct. it out, Very ठीक है. important, yeah. I've been discussing it since last year, last to last year, but yeah. It's important, I mean, it's kind of service for me to put it out. Yeah. So uh, uh, yeah, I messaged him Insta पे random कि I think we should work together. I just sent him my resume, like ये किया मैंने, आप बताओ क्या हो सकता है. So he called me saying, Ayush, आप आ जाओ मुंबई देखते हैं, ठीक है. So I was like ठीक है. Just think, he So took I a bet on you that time. And yeah. what do you think made him take it as well? Do you think there यार was a उसका twist on his स्टोरी side? तो ये है कि मेरे को आईटी वाले मैसेज नहीं करते. तो उसके साइड का ये है. तो वो स्टेज में जब भी जाता है यही बोलता है, आई नेवर गेट मैसेज फ्रॉम आईआईटी. तो मेरा 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 रीजनिंग आउट ये है कि इट हैड टू हैपन, ठीक है. एंड the reason I have faith in this organization, because right time पे right people are coming automatically, right things are happening at right time. Might sound कि कुछ भी बोल रहे हैं, but it is what it is, ठीक है. तो It might be happening because of certain actions that you're taking. No, obviously, there's this culture maybe that you're bringing, or you're attracting the right talent because you're reaching out to the right people. yeah, So I hear it's you. not just It's a very different long conversation on free will, and which we can do. It's very interesting off call, ठीक है. uh, uh, but yeah, let's just say it's happening, ठीक है. So I reached out. He said आजा मुंबई. So I was like, he didn't say anything else. I was like ठीक है. So I took my flight. I booked my own flight. I flew down to Mumbai, and it was peak COVID season. मतलब soldiers were dying. Like it was a like tuck people are dying. I flew to Mumbai. It was a COVID hotspot. ठीक है. Flights were like quite empty. Good. मतलब 2021, 2020, which year? Feb. Yeah, I flew down. ठीक है. Uh, I came here. Then I stayed with Ranveer's house. मतलब रणवीर ऊपर रहता था. He has a नीचे guest room where I stayed. Met Ranveer. We we vibed for multiple reasons. We vibed because as a human, he is a great human. मतलब when you meet him outside, no, he's a bakchod human. You love him. So his sense of humor, my sense of humor is quite similar, very dark. We talk similar things. We laugh at similar jokes. So we vibed. And then that time, Ranveer and Harshil were thinking of making some shoes or something. Matlab wanted to capture the distribution he has into some value. So we were discussing. That time level name was shortlisted because the name was simple. Then we started researching what we want to do, ठीक है. And we started doing it, ठीक है. We just started doing it. मतलब इतना market research नहीं किया, just started doing it. And मेरा opportunity cost zero था. So I was like, ठीक है, करते हैं, है ना. I had like DDP जो होता है final semester में, that was going on. Man, that time was something. ठीक है. It was very intense for me क्योंकि I signed up कि मैं सिर्फ 4 घंटे काम करूंगा, ठीक है. बाकी टाइम मुझे मुंबई घूमना है, ठीक है. And college manage करना है. Wait. But So when I came, you went there, you started working with Harshil, and what happened then? Like, did you start brainstorming an idea? Did you know that he was building something? Did you get to know after you got there? How did that take place? भाई कुछ नहीं था, ठीक है ना. इन अ वे बहुत रैंडम था, ठीक है. कुछ से soon you will realize कि a product company, when it's consumer facing, uh, every 1 year the product has a new soul, 1 or 2 years कुछ change होते रहते हैं, ठीक है ना. It's all execution that matters. उस समय nothing was there, just there was a concept कि कुछ करना है in this fitness space. Can be any product, can be an app. मतलब
app was more And you shortlisted क्योंकि it has chose fitness. digital Why? distribution. अरे क्योंकि फाउंडर फिट था ना. uh, there was a founder fit in this place क्योंकि beer biceps has a grew हाँ, with fitness. okay, ठीक okay. है. Ranveer Harshil is himself a very fit guy. मतलब उस समय मेरा टोन था but I am fitter now, way fitter. ठीक है. um, uh, अभी तो एक फाउंडर फिट था. ठीक है. and they wanted to, I mean क्या है ना कि somewhere you need to lock down the market. So they chose to lock down on this market because they were more founder fit mindset. So they chose this market. Let's just put it this way. Okay. The Got it. various ways to fix a market where you want to solve a problem. Okay. And think So there was, another important thing is also for your fit, right? If you fit into that particular market or not just for sake of working with an early stage startup or a हाँ, startup which is not even formed, but हाँ. how did you approach it? Were you into fitness यार earlier mental. that So made you हाँ. go towards it? So मेरा मेरा फंडा सिंपल था. ठीक है. मैंने वो अपने पोस्ट में भी लिखा है कि if you want to build scalable empires, you need to be scalable yourself. Hmm. You are a startup in your own self. True. ठीक है. ठीक है. If you can't manage yourself, I'm pretty sure after 10, 20, 30, 40 people, 400 people, you won't be able to manage them. It will become it will become a horse you can't ride. ठीक है. Yes. तो मेरा ये फंडा क्लियर था. ठीक है. एंड कॉलेज में आई वाज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ. बट कोविड के समय आई हैड द रियलाइजेशन कि नहीं बॉस, थोड़ा स्केलेबिलिटी पे करना पड़ेगा. पता नहीं कहाँ से था ये फंडा क्लियर, मुझे याद नहीं है बट था. ठीक है. तो दिस बिकेम a very good opportunity me कि चलो I'll be spending a lot of time in making myself scalable and build a scalable business. ठीक है. तो एक बहुत स्वीट स्पॉट बन गया मेरे लिए. ठीक है. तो फॉर मी टू जस्ट स्लिप इन. ठीक है. आई हैड, मतलब since I said I had explored a lot of things with my mind and body earlier also. तो मेडिटेशन करने के बाद I figured out कि there is a calling. ठीक है. There is why this is not famous. I mean, I didn't get it at that point of time. ठीक है. Then I entered in that zone and we started building. उस समय तो मुझे प्रोडक्ट का पी भी नहीं पता था. ठीक है. तो आई डिडंट नो प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है, रूथलेस क्या होता है, मुझे विजन मिशन का डिफरेंस भी नहीं पता, कुछ नहीं पता था मुझे लिटरली. बट मुझे ये पता था एग्जीक्यूशन मैटर्स. वो सोल्जर मेंटालिटी से एंटर्ड एंड या figured out things grew. Specifics में I don't know how to break it down. There's a plethora of information. इतना information है. You ask me question, I'll break it down. That will be easier for me. A lot of things happened, man. A lot of things happened. Mayank, anything from your end that you'd like to highlight? I think this journey is new for you. I have seen it, at least experienced it I through. have a lot of questions, but just wanted to put पूछो. the right one Yes, here, yes, right? पूछिए. So after college, right? मतलब एकदम ये scratch से idea create हो रहा था, and right, it was all random things that happened, right? You reached out to Harshil, and then he accepted, and then all of a sudden you entered into this startup journey, which is new to you, right? So what are the challenges that you have faced there, right? मतलब while learning, obviously you were learning around the product and how to develop it further, but what further challenges you have like encountered in the startups that you might have not like encountered it in corporate life, right? You might have seen your friends in the corporate world doing just daily jobs, right? And a regular piece of work. What extra challenges you might have faced, and मतलब उससे कितना टाइम लगता है सीखने में और कैसे सीखा, किससे सीखा? I hear you. Like, let's see this story from my perspective. ठीक है. या Final semester. Uh, I'm working with a guy जिसको 19 years से 35 years तक इस बिल्डिंग स्टार्टअप 200-300 करोड़ का वैल्यूएशन बनाया. He knows too much. ठीक है. Sitting with him, not knowing anything about P also of product, the information gap initially and the exposure gap. See, when you meet a founder, no, when you meet him on ground, when he is in its element, अभी तो काफी मतलब camera on है. But when you meet a founder of that stature, when he is in the element, it's a different aura energy. Like एकदम they are in some mission, okay. ठीक है. तो
for me, it was everything was new. I mean, I don't know what was not new. Okay, everything was new. Okay, the people I was working with at that time knew way more. Uh, the industry I am in, I knew little less. Okay, Hmm. uh, the skill set that was required, I मतलब obviously that's why I said कि college में जो सिखाते हो generally real world में नहीं होता. I didn't know that also. ठीक है, and for me parallelly DDP चल रहा है. ठीक है, so it was a very intense time. DDP is like you need to make some high project जिसमें 40 Final credits sem कुछ होते project, हैं. right? That's what. हाँ, 40 credits, 40 credits, Correct, good correct. credits. ठीक है, Yeah. so too much Things are happening around. information. ठीक है, too much information, too much impulse. And I think one thing that, let's just say, what is my natural strength? ठीक है ना, वो I'm born with. ठीक है, can't break it down. ठीक है, one thing I'm born with is impulse. Lot of information जब आएगा, I have the ability to, जो मैंने start में भी बोला था, first year में भी हुआ था, calm down, बैठो. ठीक Just है, first year में observe. भी यही हुआ था. Too much information, sit, observe. Second is structure. Um, मतलब this is what my founders are saying, my teammates are saying, so I'm echoing this. ठीक है, uh, so they say that my natural strength is in structuring of information to make sense of it. ठीक है, Hmm. so that comes very natural. I can break down emotions to a variable key. It can be put into equation. I have done that just to see ki how level pe I can go. ठीक है, obviously it's not a blanket that fits all situation, but in certain situation I was able to do. ठीक है, so the 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 natural inclination to break down things to the axioms कि और ना टूटे. ठीक है, the first principle जो बहुत famous है Yeah. word, it was part of me. I don't know from where. ठीक है, it was not refined, but now it's very refined. उस समय इतना refined नहीं था. That was there. Second was uh, the question कि the faith in my the faith in the Beliefs. plan. Okay. Not my faith, the faith in the person who might be running the game. ठीक है, Okay. the nature, the faith की ठीक है, चल worst case क्या है, मतलब comfortable with the worst case. ठीक है, ठीक Hmm. है, the faith की जो भी चलाएगा, worst case में भी अगर वो गंदा चलाया nature, तो क्या हो जाएगा. ठीक है, तो the faith की सब अच्छा होगा, help me assimilate the impulse of information and baby steps. मतलब एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होता है मुझे. ठीक है, इट कम अभी जितना भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है. जो लोग 30-40 में कर रहे हैं, वो मैं आई एम नॉट सकिंग माई ओन बैक, बट वो नेचुरली दिख रहा है, हो रहा है. ठीक है, Hmm. तो आई कैन टेक मोर डिसीजंस विदाउट, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट. I have zero problem in saying that. I think it's a strength. That's a In strength. 0 to 1. So you can. That's why you're an explorer, right? You can't be a हाँ, perfectionist. हाँ, It's 0 to just 1 में an इट्स अ explorer. सर्वाइवल स्किल Yeah. अकॉर्डिंग टू मी. तो 1 to 10 और 1 to 100 में देखो, वो मुझे नहीं पता, बट 0 to 1 में यू perfectionist is an issue. You will slow down the velocity of your work so much. That's true. ठीक है, तो I had this mindset कि मतलब this story inspired me. Okay, I would love to share. तो Yeah. 2 ग्रुप्स थे. ठीक है, पॉटरी मेकिंग कंपटीशन था. एक ग्रुप को बोला था भाई तुम बनाओ, थोड़ो फोड़ो बनाओ. ठीक है, दूसरे को बोला था अच्छा बनाओ. कंपटीशन क्या था कि कौन कितना वॉल्यूम ऑफ पॉट्स बना पाएगा विथ लीस्ट परसेंटेज ऑफ वेस्टेज. ठीक है, Hmm. तो स्टार्ट किया इन्होंने, बनाना चालू किया. टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है. फिर धीरे धीरे दे फिगर्ड आउट द राइट प्रोसेस. इन्होंने इतना वॉल्यूम बना लिया कि वेस्टेज परसेंटेज जो इनिशियल था वो कम हो गया. Hmm. इन्होंने उतना वॉल्यूम नहीं बनाया क्योंकि भाई परफेक्ट बनाना है. ठीक है, तो इट हैज बीन प्रूवन मतलब साइंटिफिकली आल्सो कि व्हेन यू आर ब्रेकिंग, but there was this research and I get it intuitive level पे. मतलब अभी जब मैं ज्वाइन किया था, I was मतलब I had a mindset of a leader, but tag wise as an intern I joined, and parallelly और भी 2-3 लोग थे. ठीक है, तो I saw कि where I got the edge through this, क्योंकि let's just say कि I was able to execute the first mindset of building more, breaking more, and doing it without overthinking. ठीक है, way more regularly. ठीक है, and there was a difference. I mean, uh,
बहुत डिफरेंस, मतलब एक्सेप्शनल अमाउंट पे डिफरेंस कम्स बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो या तो मोर टुवर्ड्स एग्जीक्यूट, if I have to summarize your question कि how did I manage that, one was like it's okay, have faith, ठीक है, हो हम्म। जाता है, मतलब आई एम नॉट द ओनली वन जिसके पास इतना कुछ आया है, ठीक है, नॉर्मलाइज द सिचुएशन बेसिकली, ठीक है। सेकेंड वाज थिंक फ्रॉम द एग्जाम लेवल, मतलब व्हाई ऑलवेज आस्क, मैंने वो पोस्ट में भी लिखा है, ऑलवेज आस्क व्हाई, गेट द एग्जाम्स राइट, मतलब स्पेंड टाइम इन गेटिंग द एग्जाम्स राइट। थर्ड इज एग्जीक्यूट, ठीक है। एंड फोर्थ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एंड वो एक हंगर होता है, क्यूरियोसिटी होता है जो चीजों को मैनेज कर देता है, एंड बी अ टफ नट, मतलब राइट। ठीक है, अगर तुम्हें स्टार्टअप बिल्ड करना है वो भी बूटस्ट्रैप, और तुम्हें चाहिए मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो, ये भी, मतलब बी अ टफ पर्सन, ठीक है। Yeah. uh, मतलब व्हाट आई मीन बाय मेंटल हेल्थ, मतलब यू It's कांट not सीक every time कंफर्ट, easy going, right? Life is not हाँ, every यू time easy डोंट going. सीक When you are कंफर्ट, building stuff, yeah, हाँ, exactly. Don't seek डोंट सीक comfort. कंफर्ट, इट्स, लेट इट बी, डोंट सीक कंफर्ट इज अ बेटर वर्ड टू पुट इट, मतलब ठीक Yeah. है। Yeah. तो हो जाता है, ठीक है, हैव फेथ, Hmm. हैव फेथ। Great, Ayush. हाँ, See, so, तो या हाँ तो कुछ बोलो ना सेम टॉपिक पे, ये तो मैंने मतलब रीड मोर, नो मोर, आई मीन एक टाइप के बाद ये भी पता चलता है कि डोंट, मतलब यू, इफ यू हैव सर्टेन बेसिक्स राइट, ठीक है ना, you will grow faster, ठीक है, you might outgrow people who you look up to, कि oh my god that person, then slowly you will outgrow them also, then you will, you you need to have basic infrastructure in place कि you will continuously grow, you need to have a maker checker system in your own life along with, मतलब तुम बना रहे हो तो there needs to be a check, and maker checker system is a very nice thing I learned in life. So is there noise coming from the background? No. Okay, cool, someone is shouting, they are playing, okay, yeah. सही है। So just to know, right, how do you see your competitors, or maybe like before that question, right? Do you want to talk about level, right? What you guys are Yeah, doing, what you guys are building, and just to promote it, right, for the audience. ठीक है, सिंपल भाषा में तो लाइफस्टाइल ऐप है, Hmm. ठीक है, इनोवेशन Yes. एज सच नहीं है, इट्स नॉट अ Hmm. इनोवेशन लेड प्रोडक्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट्स अ प्रोडक्ट लेड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लेड माइंडसेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो the problem we are solving is supercharging the mind of the user through content like meditation, neuroscience backed meditation, sleep story, lifestyle app, journal, uh, and mind muscle workout तो सारा चीज if you do you can get more from your life, that So is there for are sure, मतलब yeah, courses, audio courses or what, right? या What नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स देख ले तू, Netflix is there. नेटफ्लिक्स Okay. नेटफ्लिक्स Hmm. टू रीच सुपर चार्ज योर माइंड, अगर Hmm. दैट Good way to टैग put it. स्टिक्स, ठीक है। हाँ, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एट लेवल, ठीक है ना, वी आर बिल्डिंग वन स्टॉप गेमिफाइड सोल्यूशन, ठीक है, दैट विल हेल्प यू बिल्ड हैबिट्स टू सुपरचार्ज योर माइंड। तो हमने बहुत से यूजर को कॉल किया, वी have meditation in Bengali, Marathi. We are regionalizing the content. मतलब जितने भी content है, it will be in, my internet is unstable, but ठीक, तो Good, good. No, no. Yeah. जितने भी कंटेंट है वो रीजनल लैंग्वेज में बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड, गेमिफिकेशन, ठीक है, कंपटीशन डजंट हैव अ गेमिफिकेशन एंगल टू इट, so we are building something like create kind of vibe around this thing, ठीक है। If I have to, not exactly that, Duolingo is a good example, ठीक Yeah, है। yeah. Hmm. Duolingo Leaderboard kind and of, experience हाँ, points. Thing like that. हाँ, डुओलिंगो वाइब अराउंड दिस हैबिट, ठीक है। हमने बहुत रिसर्च किया, ठीक है, कि हाउ टू मेक हैबिट, एंड तो आई Hmm. एम जस्ट पुटिंग आउट वर्ड्स जो इजीली रिलेटेबल है लोगों के लिए। तो डुओलिंगो ऑफ द माइंड सुपरचार्ज कंटेंट, एंड वन स्टॉप, तुम यहाँ आओ, ठीक है, और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब मिल जाएगा जो लिटरली काम करता है, मतलब उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं, मतलब इवन कोचिंग निकालना है, मतलब जेई निकालना है, तो इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड कि कोचिंग से निकलेगा, देयर इज अ कोरिलेशन, देयर इज नॉट अ कॉजेशन, बट अगर तुम्हारा ब्रेन सुपर चार्ज है, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज कॉजेशन, मतलब ऑल्सो कि एग्जाम निकलेगा। एंड सुपर चार्ज करने के वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट सस्टेनेबल तरीका इज मेडिटेशन,
did all my research. No, मतलब full clarity on the statement. So mind को supercharge करना, meditation is one of the best tool to do that. There are a lot of types of meditation. ठीक है. So we are bringing in that in the uh, problem solving infrastructure. Yeah, game points आते हैं. You Yes. can trade it off, get some goodies जो बन रहा है. What is the ठीक है. USP of Level compared to your, say, competitors? So I'll repeat that. ठीक है. One, regionalization of content. We have 4 USPs. ठीक है. Regionalization of content कोई नहीं कर रहा है. We are building in local languages क्योंकि वो entry barrier होता है कोई भी knowledge को seek करने में. ठीक है. Second is gamification. Habit building is an issue. So we are using gamification angle to break that the friction to build habit. ठीक है. We are working on the gamification engine day and night और अच्छा होगा time के साथ. Third is one stop. There's no app in the market जो सब कुछ इस पैकेज में एक जगह दे रहा है. ठीक है. Okay. ठीक है. One stop. And fourth was regionalization, gamification, and one stop. क्या ब्रो अभी 3 ही है. ठीक है. एक और है मेरे को याद नहीं आ रहा. But ठीक है, ये 3 है, which gives us a unique positioning in terms of our competition, right? Yeah, so that differentiates the thing from the competition and the market. When you see this market now, like the global players, मतलब there are small players, but एक दो बड़े sharks हैं यहाँ पे. Headspace काम हो गया. ठीक है ना. तो there are a lot of, मतलब अभी वर्ल्ड में कितने 0.5% लोग मेडिटेट करते हैं. Statistically 1% करते हैं मैक्सिमम. ठीक है. There's so much headroom of growth. ठीक है. And भाई मतलब मेडिटेशन इंडिया में बना है. ठीक है. अब इंडिया से प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो इट्स नॉट, मतलब इट्स थोड़ा सही नहीं दिख रहा है. It's not right. यूएस में ठीक है. ज्यादा तो ट्रेंड कर रहा है इंडिया से. If you see the percentage of people who are meditating there and meditating here. Correct. I see like this कि meditation as a product is like what toothpaste was in 90s. ठीक है. And diamond was in 40s. ठीक है. तो अभी adoption चालू हुआ है. ठीक है. और हम जब जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन अवेयरनेस का, विल टच दैट, बट एक बार अवेयरनेस फैलेगा तो द बिगर फिशेस विल बी अडॉप्टेड फास्टर. द बिगर फिशेस मतलब द वन विद अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ठीक है. विल बी अडॉप्टेड फास्टर. ठीक है. तो अभी मार्केट 3-4 साल में, मतलब इट्स अ इमर्जिंग मार्केट. Emerging market. इट माइट हैव अ लोअर टैम. ठीक है. कितना भी 4 बिलियन 5 बिलियन 15 बिलियन व्हाटएवर, इट्स हार्ड टू गिव अ टैम टू दिस मार्केट. ठीक है. But for sure, it has a huge scope of growth. And riding that wave from India is a very smart positioning also. Okay. So, yeah, so it has huge scope of growth for sure. It's exactly like what toothpaste was there in 90s. लोग adoption rate कम था, लोग करते नहीं थे, लोग जो भी करते थे. Exact same story I can see that this can be. It's an interesting comparison for sure. But I think जो तो बोल रहा है कि market size बढ़ाना है. And are you aiming to say spread more awareness about it on the grassroots levels, which means say starting from school onwards? I think you mentioned something similar, right? Government भी ऐसे directives ला रही है जहाँ पे meditation compulsory होगा, say in education institutions. So that would be one factor of increasing the awareness. And even अपने age group में देख लेते हैं, age group that you're targeting, 20s or 30s, that if you're targeting that age group, how many people really meditate, right? Even in our friend circle, if you see, how many people really meditate? So what steps are you taking to increase that kind of awareness and the importance of meditation? Even though people know about it, they're still not doing it. So there needs to be some kind of a trigger that tells them For कि हाँ. sure. Let's understand the problem, the why. ठीक है. So I figured out the why is social credibility. ठीक है. 2010s में I think इंडिया में 6 packs फेमस नहीं था ना. करेक्ट. नहीं उस टाइम पे हाँ इतना कुछ था नहीं था इंडिया में. नहीं एक्टर्स की एक्टिंग देखते थे काइंड ऑफ. Actors Bollywood has brought in 6 packs basically. हाँ. तो देख, पहले यूएस में 6 पैक फेमस हुआ. ठीक है. फिर इंडिया में 2010 के बाद फेमस हुआ. मेडिटेशन यूएस में फेमस हो गया है. कहाँ आ रहा है? तो देयर द इशू इज सोशल क्रेडिबिलिटी. ठीक है. लोगों को भरोसा नहीं है उतना
या पता ही नहीं, सोशल क्रेडिबिलिटी कवर्स इट नाइसली। या तो Okay. अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है तो उसका इम्पोर्टेंस, मतलब जैसे मैं ब्रश नहीं करूंगा, लाइक कोई ब्रश नहीं करेगा तो देयर इज दिस अवर्जन की ब्रश कर भाई, ठीक है। तो उतना सोसाइटी में इंटीग्रेटेड नहीं है नॉलेज, ठीक है। सोशल क्रेडिबिलिटी इज द इशू, ठीक है। तो वी नीड टू सॉल्व फॉर सोशल क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो आई कंपेयर दिस विथ हाउ वाज सिक्स पैक एब्स इन 2010 एंड हाउ वाज टूथब्रश इन 2000 अर्ली 1990s में। तो उन्होंने क्या किया, न्यूरो साइंस डाला और थोड़ा ग्लैमर डाल दिया, ठीक है। वी आर डूइंग सिमिलर थिंग्स। ग्राउस रूट लेवल पे चेंज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे बीएमसी स्कूल्स में ऑलरेडी जाते हैं, 15,000 स्टूडेंट्स को ऐसे ही सेशन दिया हम, ठीक है, जहाँ पे लेट देम टेस्ट इट एक बार, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन इज अ प्रोडक्ट जिसका डिलाइट फैक्टर अच्छा है, यू आप बैठो, करो, अच्छे से करो, पोस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट यू विल फील नाइस, ठीक That's है। true. That's true. The product itself has a delight factor. I don't have to put more things over it to make it Just to nice. initiate and start it, right? Once they हाँ, get into the groove, it's easy to retain customers, I would say. But लॉयल्टी हाई है, स्टिकीनेस हाई loyalty रहता है high इस है. इंडस्ट्री में। हाँ, But बस एक बार स्टार्ट start. करो, इंजन पुश करो, खट खट खट, ठीक है। तो मेरा पर्सनल इंस्पिरेशन टूथपेस्ट का मार्केट है, कैसे वो फैला, ठीक है। अभी उनका डाउ कितना है, 3.5 बिलियन पीपल, Yeah. मतलब इतना सारा डाउ है टूथपेस्ट इंडस्ट्री में, ठीक है। डेली एक्टिव यूजर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मेडिटेशन विल अभी 0.5 है, ठीक है। तो इट हैज अ ह्यूज, आई हियर की टाइम लगता है, बट इट हैज ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ, है ना। Yeah. But I क्योंकि think like what you covered, right? This gamification will definitely help because लॉट ऑफ थिंग्स, habit building is very important. Yeah. तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो एक गेमिफिकेशन हो गया, रीजनलाइजेशन, फिगर आउट की यूजर को हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। सी ऑल दीज थिंग्स ना, व्हेन यू टॉक टू यूजर, तो इट बिकम्स फंडामेंटल, यू डोंट हैव टू थिंक हाउ, द सिस्टम गिव्स यू द हाउ। इसलिए मैं Hmm. बोलता हूँ प्रोडक्ट ड्रिवन कम, आई विल ब्रिंग इट बैक, क्योंकि टाइम नहीं है ना, Product तो review. आई विल ब्रिंग इट बैक टू स्टे नियर कंज्यूमर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली द हाउस स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द यूजर इटसेल्फ, ठीक है। तो या रिगार्डिंग अवेयरनेस, रणवीर का डिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट के साथ टाई अप्स है, इनबिल्ट स्कूल में जाना है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, मतलब देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दैट्स पॉसिबल इन That दिस, exactly, that's what I'm coming to. I think that would really encourage people. और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का इतना, it's easy to afford them, let's just be very simple, ठीक है। You can, but they have huge, मतलब loyalty, मतलब people trust them, ठीक है। And That's there. But don't you बाबा think that ट्रस्ट is तो one of the इंडिया में बिकता factors? ही है। Don't you think that is one of the factors why people are not going towards meditation because उनका image अलग सा बना हुआ है. कौन बेच रहा है, बाबा बेच रहे हैं तो रिपल्शन Baba आएगा, does. Hmm. ठीक है। अब आके तुम्हें जो रोगन और नवल रविकांत बेच रहे हैं मेडिटेशन, That is a different. You ठीक can है। consider तो even Ranveer Allahbadia, right? Because he himself हाँ, meditate a lot and he talks also about it a lot, right? Because हाँ, वो आकर किसी दिन मार्केट में बोलेगा कि मतलब you can try using it, मतलब it can help you. तो He has taken out a video specifically for level. हाँ, hmm, या oh nice. It was तो a good. कौन बोल रहा है दैट मैटर्स। सी इश्यू ये है ना, द लैंग्वेज मैटर्स, ठीक है ना। यूथ का लैंग्वेज बोलना पड़ेगा आपको, तो वो Hmm. इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे, ठीक है। एंड वो करेंगे तो उनको द द द प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज अ, द मेडिटेशन इटसेल्फ हैज अ डिलाइट फैक्टर, तो उनको ऐसे अंदर से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। इट विल कम नेचुरली कि हाँ भाई Yes. हुआ है मदद भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो फ्रिक्शन नहीं है उनके अंदर भी, ठीक है। तो yeah, I think social credibility is a very tricky thing. Needs to be structured with lot of influence marketing. Can be movies, can be मतलब Headspace ने Netflix में डाल दिया, very smart thing. Yeah. तो one is media, ठीक है। Second is lot of neuroscience, involvement of science, जो टूथपेस्ट ने किया कि 9 out of 10 scientists are saying you, dentists are saying Use use। this. तो हम लोग ने भी यही किया है, हमने एक हेड गियर के साथ कोलैबोरेट किया, 40 days का एक्सपेरिमेंट किया। we measured वेरियस ब्रेन पैरामीटर्स की 40 डेज रेगुलर मेडिटेट करने से लेवल ऐप से स्पेसिफिकली कितना इंप्रूवमेंट आता है, वाइट पेपर आने वाला है। तो लॉट ऑफ इंक्लूजन ऑफ Wow. न्यूरो साइंस, नंबर्स, Nice. ट्रस्ट, ठीक है। तो
ऐसे ऐसे बहुत कुछ है जो कर सकते हैं, हाँ. बट टूथपेस्ट और जो एग्जाम्पल है टूथपेस्ट और बॉडी का, वहां से बहुत इंस्पिरेशन आता है. तो द Hmm. you need to just have the grit of execution to learn from that and do that. मतलब ठीक है. Do you think so? And बाकी भी प्रोडक्ट. हाँ. So on your Go ahead, budget, go ahead. marketing spend is a lot right now, No because you man. need to spread So that awareness, right? So how do you? मार्केटिंग बजट, अगर मार्केटिंग बजट बहुत है मतलब मार्केटिंग टीम काम नहीं कर रही है अच्छे से. ठीक है, डिपेंड्स मतलब. ठीक है. तो स्मार्ट मार्केटिंग टीम विल स्पेंड लेस. लेट्स बी वेरी क्लियर. 5 स्टार का ad देखा अभी वो 5 स्टार वाला जो Yeah, उन्होंने. it was a great ad, man. हाँ मतलब they तो have not taken any actors, they have not taken anything, but just they have, it's just a thought, right? मतलब हाँ wonderful Mhm. ad. हाँ तो टॉपिक फॉर अनदर कॉन्वर्सेशन, बट डिजिटल कैट से Yeah, बिजनेस बनाना थोड़ा definitely. मुश्किल है. ठीक है, कि आप फेसबुक में पैसा फेंक रहे हो, ये हार्ड है. Hmm. हार्ड है भाई. थोड़ा Hmm. थोड़ा गेम अलग खेलना पड़ता है. ठीक है, तो वहाँ पे दैट्स व्हाई द गेम बिकम द गेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. द बिगर फिश विंस. ठीक है. तो देयर आर वेरियस वेज टू सॉल्व इट. ठीक है, So yeah, दैट्स द चैलेंज. Great, Ayush. It was very हाँ. nice talking to you. I think 5 मिनट बाकी है. आयुष Hmm. conclude करते हैं with any tips or Candid or any learnings, ज्ञान any bombs that you want candid to drop. thoughts. Yeah. Hmm. यार, ज्ञान बॉम्ब्स का क्या, ज्ञान बॉम्ब्स काम नहीं करते जब तक वो रियलिटी नहीं है तुम्हारा. ठीक है, तो मतलब आई थिंक गेट द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ राइट. ठीक है, जैसे 8th 9th में हम लोग पढ़ते थे ना, 10th में एम इज ग्रेटर देन जीएम. गेट द एक्सियम्स राइट ऑफ लाइफ. ठीक है, एंड ट्रस्ट द एक्सियम्स. एंड डोंट थिंक हाउ ऑल द टाइम. थिंक फ्रॉम द एक्सियम्स ऑल द टाइम. एंड आई थिंक अपने आप कोई सोल्यूशन निकल जाते हैं. ठीक है, डोंट जंप टू सोल्यूशन, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. ऑलवेज हेल्प्स. Hmm. और क्या ज्ञान दूं भाई. ट्रस्ट नेचर. मतलब ट्रस्ट हैव फेथ इन व्हाट्स हैपनिंग. मतलब डू नॉट, क्या है ना, इफ यू वोंट हैव फेथ यू विल स्टार्ट ओवरथिंकिंग, एंड ओवरथिंकिंग सर्व्स नो वन. ठीक है, आई एम ऑल माय कॉर्पोरेट फ्रेंड्स आई एम सीइंग, मतलब फंडामेंटल ऑफ लाइफ थोड़ा ऑफ है. तो मे बी दे विल, लेट्स जस्ट से कि दे विल रीच टॉप, एंड आई विश दे विल रीच टॉप. दे विल श्योरली रीच टॉप, बट व्हाट एट व्हाट कॉस्ट. ठीक है, तो गेट योर फंडामेंटल राइट, ताकि you pay right cost. A wise person will do enough, not more or not less, to Correct. reach where the person has to reach. ठीक है, तो get the fundamentals right. And fundamental right कैसे होगा? lifestyle right होगा. तो one of the major Pareto thing is lifestyle. Get your lifestyle right. Know how your body works, know how your mind works, know your needs, know how your childhood is. Lot of things. मतलब I think invest in therapy is a good thing. ठीक है, surround yourself with right people. मतलब That's very important. Hmm. Right. मतलब गाना डांस इज गुड, बट अल्कोहल मिक्स करना, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट एट व्हाट कॉस्ट इट इज कमिंग. बी अवेयर ऑफ इट. मतलब if you can pay that cost, do it. ठीक है, तो know the costs of action is what I'll say, and things will be nice. Trust universe. I mean, down the line everything really gets, you get used to things. तो that's the best part. ठीक है ना. आई थिंक यही है. अब बाकी क्या लर्निंग, मतलब पूछो, बता दूंगा. इट्स गेट द, No, नहीं, सोच के नहीं completely. आया था मैं कि ये 3 बोलूंगा मैं. ठीक है. हाँ, नहीं, बाकी आई I मीन think हैव फन मैन, हैव फन. मतलब yeah. शेयर मीम्स. मतलब इफ यू आर नॉट हैविंग फन, समथिंग इज रॉन्ग. समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग. If you're not enjoying it, something is really wrong. Reflect. But yeah, and I think you So should keep posting on LinkedIn about your learnings. That yeah, would man, I'm be thinking like, of posting 15 days. अभी मैं जब ये post डाला तो someone reached out to me. उसके 6 digit, like 3 4 6 digit followers reach out के. So I'm thinking of like we can sit together and ask them कि problem ये ना effort लगता है लिखने में. तो how to reduce that friction of writing, how to come up with ideas. I'm thinking of structuring. I want to get into the axioms of what sells on LinkedIn first, because I don't get the game. Obviously, I'll call you Nishan for this. I So think he's the right guy. I want to get the axioms right. Once I get the axioms right, I know I'm very creative to yeah, uh, that you'll manage how to really post and that I'll create. manage. हाँ. So this year one of the goal is to get the axioms of social distribution right, social media distribution right. Hmm. Not for brand, that I've got it right for personal. मेरा brand चमकता है कि कैसे बिकता है, but personal भी एक बार देखना है.
it's थोड़ा different. Just to before concluded, right? We have got one question from the audience. What memes you like? You should. Dank memes, man. Like dank meme. My humor is getting so dark with time. I'm so scared that someone sees my humor. Are you a Dank baby, meme. are you a Yeah, dead guys. baby joke fan? Not dead baby jokes. The joke should be funny. Okay. I'm a fan of shock. They are fun. Okay. Okay. Shock. Fan of shock. Well, Okay. there should be a huge shock element and there should be reality in that shock. Okay. Is that why you are running a startup? Just kidding, man. Just kidding. so, so there should be some truth to it, and there should be a shock element. And I think dark memes have like, I'll share with you. You'll get the हाँ vibe. मुझे भेज ठीक है ना? हाँ. I love dank memes. So that's thank you so much for taking your time out. Thank you for Means a lot. giving us your time, Yeah, dude. yeah. काफी बढ़िया Yeah, था. man. I think we got a lot I of. wanted to start with some meaningful note and thought कि चलो सही है निशांत है भाई है अपना, let's grow together. So I I hope have you one enjoyed. tomorrow. I loved it. We'll Yeah, connect. We'll be in touch. Let me know how I can add value beyond this. ठीक है. Would love to add definitely. value. Done. ठीक है. Definitely. लेने के लिए ठीक है. reach out to me. मैं भी कुछ नया Yeah, सीरीज sure. experiment करने वाला LinkedIn पे, which I was just talking to Mayank about before the podcast. So Sure. Chalo. We'll be in Cool touch. then. ठीक है. done. चलो. Take care. Bye. All the Thanks, best. Ayush. Bye. Bye. Bye.